Hello dear students, very good morning to all of you. And as you know, we have given you already the IDs and password at TCS platform, and hope all of you have logged in your IDs and passwords. There were some students who were coming to our college, sir, we have this kind of problem. So we tried to solve that, and hope all of problems are solved. On the first day, before 5 or 6 days, I uploaded the copy of syllabus of 5th semester at TCS platform, and hope that all of you have got it and you have noted down in your notebook. So this time I hope that we will start the study. I also uploaded the text of the poem and something like critical appreciation and some notes on TCS platform. Hope all of you have got it. Now today I will start the poem. As I mentioned that 3 or 4 days ago, I provided you all the study material about this particular poem and syllabus. So this time, this book selections in English poetry. I hope that you have this book. If you don't have this book, so I also provided you the text of the poem, and I hope now you have taken out the print of this poem and you have this poem. Because when we start the poem, so this is better that we should have the text of the poem. If we don't have the text, it becomes very difficult to us to study the poem. So, dear students, you can see the name of the poem. I wonder Lonely as a Cloud is the first poem of your syllabus. This particular poem, when there was a year system or annual system in BA, it was named as The Daffodils. This poem is written by William Wordsworth. I hope many times in first year or in second year as well in the 5th semester, so you have heard the name of William Wordsworth from my class. Many times you have heard this word, I hope. And William Wordsworth is known as the nature poet. First, he is also considered as the harbinger of nature. Or priest of nature. The video clip before 3 or 4 days that I sent to you at TCS platform, I mentioned these things in my speech or in my audio also. So if you have gone through that particular clip, so I hope you have this kind of basic information of William Wordsworth. क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को? नेचर को, और हार्बिंजर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का पुजारी. William Wordsworth belongs to romantic age. ये भी आपको पता होगा. कौन सी एज से बिलोंग करता था विलियम वर्ड्सवर्थ? रोमांटिक एज. When we say he is a nature poet or he is the harbinger of nature or the priest of nature,
it becomes automatically clear that the subject matter of the poem of William Wordsworth or the subject matter of the poetry of William Wordsworth most of the time is nature. He considered the nature as the mother. He considered the nature as a teacher. That was the particular theme of William Wordsworth. Here, when we discuss the poem, either we can say daffodils or I wandered lonely as a cloud. So when we discuss about this particular poem, so it becomes first to us that we have to describe the title of the poem, the daffodils. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए daffodils है क्या. तो daffodils is a kind of flowers that is found in England. एक येलो कलर फ्लावर, एक पीले कलर का जो फूल होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कनेर का फूल होता है, उस तरह के डैफोडिल्स के फ्लावर कहां पर मिलते हैं देखने को? इंग्लैंड. One time Wordsworth was going with his sister in a particular place. I am forgetting the name of that particular place in England, and he saw a large number of daffodils there on the bank of a river. And when he saw that scene, he became so emotional. He became so impressed that that particular scene has made a place in the brain, in the heart of William Wordsworth. उसने जो वो सीन देखा, वो क्या हो गया? उसके दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ा. और when he was in the time of tired, when he was feeling sad, that picture visualized in the brain, in the eyes of, in the mind of William Wordsworth. आज जब वो बिल्कुल थका हुआ, बोर हो रहा है किसी समय, उस समय वो सीन which was not noticed a long time ago, उसके दिलो दिमाग पर दोबारा से आने लगता है. और जब वो सीन उसके दिमाग पर आने लगता है, तब वो एक पोइट्री कंपोज करता है, सॉरी एक पोएम कंपोज करता है, और उस पोएम का नाम क्या है? डैफोडिल्स. और विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है पोइट्री के बारे में, क्या है ये? स्पॉन्टेनियस इमोशंस. स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस. वो कहता है पोइट्री कब कंपोज की जाती है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है जब इमोशंस जो है अपने स्पॉन्टेनियस फ्लो में आ जाए, देन वी कंपोज द पोएम. तो आप समझ सकते हैं कि इस पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है डैफोडिल्स, वो उसने एक सीन देखा, और जब वो बैठा हुआ था, अचानक वो भाव, वो इमोशंस उसके दिल और दिमाग पर दोबारा से छाने लगते हैं, और उसके बाद वो विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स जैसी पोएम कंपोज करता है. दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बेस्ट पोएम्स है उनमें से एक है डैफोडिल्स. Now we come to the poem. The first line, as you mentioned the title, I wandered only as a cloud. This is also the first line of the poem. यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है I wandered only as a cloud. I means William Wordsworth, who is the speaker, who is the subject of this poem. So you can say the subject is the poem, subject of the poem is William Wordsworth himself. वो कह रहा है I wandered lonely as a cloud. जब उसने first time when he saw the huge number of daffodils on the bank of river, I feel, उस समय वो कहता है कि इस समय भी फील करता हूँ, और I felt at the time I wandered lonely as a cloud. I was feeling at the time just like I am a cloud. जैसे cloud होता है, फ्री मूवमेंट करता है,
There is no restrictions of different types, and that type of things he was feeling. The clouds on high over waves and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered only as a cloud. He tells me, when once time he was moving, he was wandering as a cloud. That floats on high highways and hills, on the valleys and hills. जब वो एक बादल की तरह घूम रहा था फ्रीली, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ों पर और घाटियों में, when all at once I saw a crowd, तभी उसने क्या देखा? He saw a crowd, एक भीड़. भीड़ means a huge number of flocks, a host of golden daffodils. Host, a bunch, बहुत infinite number of daffodils flowers. And golden means, it means their color was yellow, सुनहरे रंग के. डैफोडिल्स के फ्लावर जब उसने देखे बहुत बड़ी संख्या में, बिसाइड द लेक, झील के किनारे, beneath the trees, under the trees, fluttering and dancing, and they were moving just like it, here and there. They were dancing, they were fluttering in the breeze, and there was a pleasant air. There was a you can feel कि कितना प्रकृति का सौंदर्य वहां पर रहा होगा, कि पहाड़ है, झील है, डैफोडिल्स के फ्लावर है और सुगंधित हवा वहां पर चल रही है. और उसने देखा कि ये सब they were enjoying, they were fluttering and dancing here and there. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in springing dance, continuous as the stars. Now the Wordsworth compared the daffodils with the stars. When you see stars in the sky, you can see there is a number of stars in the sky. Here and there, wherever you go, you see the stars are present. तो उसी तरह से वो कहता है कि जिस तरह से आसमान में चारों तरफ स्टार्स दिखाई देते हैं, उसी तरफ जहां तक मेरी दृष्टि जा रही थी वहां पर डैफोडिल्स दिखाई देते थे. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे तारे टिमटिमाते हैं आकाश में. दे स्ट्रीच इन नेवर एंडिंग लाइन, दे आर स्कैटरिंग नेवर एंडिंग लाइन. देयर इज नो एंड ऑफ there is no end, you can say, in the sky where we can say that there is no star. Unlimited चारों तरफ तारे तारे दिखाई देते हैं, उसी तरह से फ्लावर्स वहां पर दिखाई देते हैं. Along the margin of a way, 10,000 saw I at a glance. Now देखिए इमोशंस देखिए वर्ड्सवर्थ के. He says that 10,000 I saw at a glance. एक बार में कितने देखे उसने? 10,000. It means there was a number of daffodils flowers tossing their head in springly dance. Or they were springly dance means they were dancing in that pleasant air, in fresh air, that air which was coming from the hills, which was coming from the valleys. And these daffodils flowers, what they were moving here and there. In third passage, he says that the waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but engaged in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the short to me had brought. The waves beside them dance,
the waves beside them dance. The waves are there. They were also dancing, but they outdid the sparkling waves in beauty. There was a sparkling means when there is a decent weather, the atmosphere that was present there. You can imagine what kind of happy weather or happy climate or happy atmosphere. He says that a poet could not but be gay. कहता है कि इस सुगंधित वातावरण में, इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, how a poet could not but be gay, how a poet could be silent. भाई poetry means who creates something, who creates literature. जो वो एक कहावत है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कहता है कि कवि जो कि एक क्रिएटर है, एक तरह का जो रचनाकार है, तो वो ऐसे अच्छे वातावरण को, सुगंधित वातावरण को, प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को कैसे मिस कर सकता था? वो तो कभी भी मिस नहीं कर सकता। एक इतना बढ़िया जो वहां पर माहौल था, जो चीजें थी वहां पर, प्रकृति सौंदर्य था, उसे एक साधारण आदमी मिस नहीं कर पा रहा है, तो कभी कैसे मिस करता था? कभी कैसे मिस कर सकता था? तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि हाउ I could miss that chance, never. In such a jovial company, the company means the gathering of the pleasant weather, lake, presence of daffodils, the valleys, the hills. तो वो कहता है कि जब एक साधारण आदमी मिस नहीं कर सकता, भाई कोई कैसे मिस कर सकता था उस चीज को? तो कहता है I gaze and gaze. There are repetition of the words. I was looking and looking. कह रहा कि मैं देखता रहा, I was staring and staring. घूरता रहा, देखता रहा और देखता ही रह गया। He forgot himself when he was looking so beautiful sea. But little thought what wealth he showed to me had thought. वो कह रहा this was a little picture. This was a little thought. This was a little beautiful scene. But what kind of wealth I got at that time, nobody can guess. कहता है कि सीन बहुत छोटा सा, ये प्रकृति का सौंदर्य देखना है, एक विचार मेरे मन में जो आया, बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन कितनी बड़ी संपत्ति वेल्थ वो मुझे दे गया, उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। For often when on my couch I lie in vacant or pensive mood. For often means many times. When on my couch I lie. Couch means is a kind of chair or something. कहता है कि जब मैं अपनी चेयर पे बैठता हूँ, in vacant or in pensive mood, when I alone, I feel I am tense. I feel I am boring, or I feel, or when I sit alone, in pensive mood, they flash upon that inward eye, that beautiful scene, which I saw a long time ago. सुंदर प्रकृति का सीन जो मैंने बहुत साल पहले देखा, इट कम्स ऑन माई माइंड और आई सी दैट सीन थ्रू इनवर्ड आईज। इनवर्ड आईज मीन्स, देखिए दो आंख होते हैं, एक और एक ब्रेन। कई बार होता है ना कि हमें चीज दिखाई नहीं देती, द रीजन इज दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई एम टीचिंग हियर, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड so you will not listen to me because this ear only can vibrate the sound, but presence of mind is must. तो वही चीज वो कहता है कि ये जो इनवर्ड आईज है, इनके द्वारा वो सीन दोबारे से
कहां पर आ जाता है? फ्लैश अपॉन दैट इन गॉड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे लिए इस सॉलिट्यूड में, एकांतवास में किस चीज का काम करता है? वरदान का काम करता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स एंड डांसेस विद डैफोडिल्स। और व्हेन आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सीन, व्हेन the scene flashes on my mind in the time when I am tired, in the time when I am alone, in the pensive mood, that beautiful scene makes me happy, and I become so happy with that scene, with the remembering of scene, that my heart starts dancing with daffodils, or just like daffodils। कि वो कहता है कि वो इतना प्यारा, इतना प्रकृति का जो सौंदर्य था जो उसमें मैंने महसूस किया, उतना अच्छा सीन था कि जब मैं एकांत में बोर होता हूँ, थका हुआ होता हूँ, अकेला बैठा होता हूँ और वो सीन फ्लैश करता है दोबारा से मेरे दिमाग में, तो मुझे क्या लगता है कि मेरा जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, जो मेरा हृदय है, ये भी डैफोडिल्स की तरह नाचने लगता है। एंड आई बिकम हैप्पी, खुश हो जाता हूँ। और इसीलिए वो कहता है, देखिए दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में जो उसने लाइन कही थी कि क्या लाइन कही थी कि दिस लिटिल थॉट व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ ही हैज गिवन कांट इमेजिन, कि वो छोटा सा सीन जो उसने देखा था, इस तरह की वेल्थ उसने मुझे दी, बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए वो एक्सप्लेन करता है डैफोडिल्स को अच्छी तरह से। आई होप पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बावजूद भी अगर किसी की समझ में कुछ नहीं आया, कुछ अपनी क्वेरीज है, तो वो अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप के माध्यम से, TCS पे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन बी सीरियस, जब आप कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट अपने पास जरूर रखिए। टेक्स्ट के बिना कोई समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच।